हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो पार्ट नंबर 12 में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंडर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और गेट एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प आउट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और CivTech सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर आपके साथ ये 10 क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 12 में क्वेश्चन नंबर 181 सेज दैट ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड्स आर डिजाइन्ड फॉर ऑप्शन ए टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी शियर स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी बेंडिंग स्ट्रेंथ। ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड्स जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन किए जाते हैं। सो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। 182 पैरेलल फिलेट वेल्ड्स आर डिजाइन फॉर बेंडिंग स्ट्रेंथ, ऑप्शन ए एग्री, ऑप्शन बी डिसएग्री। यस, पैरेलल फिलेट डिजाइन वेल्ड्स जो है वो बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन किए जाते हैं। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज एग्री। 183 which of the following statement is correct? Option A, the size of hole drilled in riveting plates is less than the actual size of rivet. Option B, the center to center distance between two consecutive rivets in a row is called margin. Option C, rivets are generally specified by its shank diameter. Option D, tearing of plates can be avoided by taking the pitch of rivet equal to 1.5 times the diameter of rivet hole. So बाकी तमाम गलत है और इसमें सिर्फ जो है ऑप्शन सी rivets are generally specified by its shank diameter ये करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन 2 में मार्जिन है, यहाँ पे पिच होना चाहिए और बाकी भी ड्रिल जो रिवेट होल्ड होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होल्ड किया जाता है, लेस नहीं किया जाता। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 184 अ प्रेशर वेसल इज सेड टू बी अ थिन शेल when it is made of thin sheets. Option A agree, option B is disagree. So B is the correct option, disagree. 185 a pressure vessel is said to be a thin shell when the ratio of wall thickness of the vessel to its diameter is dash 1 by 10. Option A equal to, option B less than, option C greater than. So less than is the correct option, which is option B. A pressure vessel is said to be a thin shell when the ratio of wall thickness of vessel to its diameter is less than 1 by 10. A thick pressure vessel is always used for the creation of steam as it can withstand high pressure. Option A true, option B is false. So it is wrong. A thick pressure vessel is always used for creation of steam as it can withstand high pressure. It cannot withstand high pressure, so B is the correct option. 187 if the diameter of pressure vessel is 1.5 times the wall thickness, the vessel is said to be thick shell. Option A is agree, option B is disagree. So इस question का answer agree is the correct, so A is the correct option for this question. Diameter of pressure vessel is 1.5 times the wall thickness. 188 in a thin cylindrical shell subjected to an internal pressure P, ratio of longitudinal stress to the hoop stress is option A is 1 by 2, option B 3 by 4, option C 1, option D is 1.5. In a thin cylindrical shell subjected to an internal pressure P, ratio of longitudinal stress to the hoop stress is 1 by 2. So A is the correct option. 89 the design of thin cylindrical shell is based on option A hoop stress, option B longitudinal stress, option C arithmetic mean of the hoop and longitudinal stress, geometric mean of hoop and longitudinal stress. The design of thin cylindrical shell is based on hoop stress. So A जो है वो correct option है इस question का। 190 the hoop stress in a thin cylindrical shell is option A longitudinal stress, option B compressive stress, option C is radial stress, option D is circumferential tensile stress. So hoop stress in a thin cylindrical shell is option D is correct, which is circumferential tensile stress. So friends, this was our lecture regarding 10 MCQs questions from 181 to 190. I hope इस वीडियो ने आपको हेल्प आउट किया होगा. This will help you for GAT exam preparation. Strength of material part 13 में हम डिस्कस करेंगे फर्दर 10 MCQs. तो हमारे साथ रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें CivTech सिंप्लीफाइड को यूट्यूब के ऊपर। हम अवेलेबल हैं टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, वहां पे भी हमें लाइक करें और इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।